Hello and welcome. You're watching the opening action on Money9 as far as the markets are concerned. Now you can see both the benchmark indices, the Sensex and the Nifty both open in the red. In tandem with what the cues were, especially from the SGX Nifty, there was an indication of a weak opening for the markets, and that's what exactly we are seeing as far as the benchmark indices are concerned. You can look at the Sensex now, 51,050. That's the level that the Sensex is trading at, down about 273 points right in the opening 10 minutes, 0.5% down in trade. Now remember, we are very close to the 51,000 mark now. A slippage below 51,000 could actually further aggravate selling pressure on the markets. That's what most of the experts are telling us on our show as well. Now, when we talk about the 30-pack Sensex right now, you can actually see the screen largely in the red right now. Whole lot of pressure coming in from the big wigs and the heavyweights like ICICI Bank, also the Bajaj Finance. These kind of heavyweights are down about 2%, 1% in trade. Ultratech Cement is down about 0.5% in trade. Both the Bajaj twins are down actually. State Bank of India, witnessing profit booking right after the sharp run-up that we have seen. Dr. Reddy's, also Maruti Suzuki, IndusInd Bank, Bajaj Auto, ONGC now slipping into the red after a whole lot of green that we have seen in the past 1.5 weeks for this counter as well. From the pharma space or from the power space especially, both NTPC and Power Grid are now witnessing profit booking, 3% down for Power Grid and 1.5% down for the NTPC as well. The auto sector is also down. You can talk about Maruti Suzuki, M&M, Bajaj Auto, all of them are down in trade right now. From the pharma space, the big wigs like Dr. Reddy's, Sun Pharma, they're also down. The consumption space is also showing decline with Asian Paints down right now. IT pack is also down with TCS 0.5% down in trade. Infosys also down in trade by about 0.6% today. It's both the HDFC twins also contributing heavily to the decline in the market. So what's, kind of supporting the markets right now are these 4-5 stocks. Just a handful of stocks, especially when you talk about this big heavyweight. Reliance Industries up about 1% in trade. Hindustan Unilever again up about 1.5% in trade. Bharti Airtel, HCL Tech and L&T. These are the contributing factors to the index which are not letting the Sensex slip too much in the morning trade as well. When we talk about the Nifty 50, remember we are now inching closer to the 15,000 mark. We'll have to see whether we slip below this towards this entire session, towards the close or not, or do the bulls again protect this sacrosanct level that we have of the Nifty 50 as well. Now, when we talk about 0.5% down there, 11 advances to 39 declines. So the market breadth is also favoring towards the declines at the moment. The top Nifty gainers right now include stocks like oil and gas stocks, especially GAIL and BPCL, which were also the gainers in yesterday's trading session. HDFC Life is again picking up pace. Tech Mahindra is still up. Also UPL, there are some further triggers in Tech Mahindra that are working in for the individual company stock as well. But otherwise, the IT bigwigs are still down in trade. ICICI Bank, Tata Motors, Power Grid and IndusInd Bank and M&M. These are 1.5 to 2% down in trade and are dragging the index lower. Right now, if you see, the India VIX is actually up about 0.9%. The volatility is spiking right in the early trade as well. The mid-cap and the small-cap sectors, they have also now slipped into the red. Remember, in yesterday's trading session, they outperformed the markets. They still managed to end in the green, even though the benchmark indices and Nifty Bank, all of them had ended 0.5% lower and more than that also in yesterday's trading session. But the broader market space was still up in the green. But now, the mid-cap and the small-cap indices, both of them are seeing a profit booking as well, and they are participating in the decline that we are seeing. As far as the sectoral indices are concerned, majorly it is the contributing factors are in the red. You can see down down ticks in Nifty Bank, 1% down. Nifty Auto also 1.5% down. Financial services down about 1% in trade. Private banks are really contributing to the fall right now. लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जहां पर हरे निशान अभी भी मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, वो है ये PSU बैंक इंडेक्स. ये इंडेक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट्स को. पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने 6% तक का हर दिन मूव देखा है और अभी भी यहां पर बॉयंसी जारी है. जिस तरीके का बज क्रिएट हो चुका है बजट के बाद से ही इस स्पेस में प्राइवेटाइजेशन को लेकर, रीएलोकेशन और रिकैपिटलाइजेशन को लेकर, ये इस स्पेस में काफी ज्यादा ट्रिगर्स जो हैं अभी तक काम कर रहे हैं. जैसे जैसे खबरें आ रही हैं कि अब शॉर्टलिस्ट होते जा रहे हैं बैंक्स जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से, उस वजह से ये जो लगातार स्टीम है पॉजिटिव की तरफ ही इंडिकेट कर रही है. 9 advances to 3 declines at the moment, but still it is keeping up the markets and the index from falling too much by about 1.7% of gains that we are seeing.
मेटल इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो आज यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ऑलरेडी काफी अच्छा मूव दिखा चुकी है ये इंडेक्स। अगर आप पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में या पिछले एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो आज 1.5% तक की वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है। 7 एडवांसेस टू 8 डिक्लाइंस, बहुत ही डिवाइडेड सा ट्रेड इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। मीडिया स्टॉक्स आर अप, आईटी स्पेस में भी अभी वीकनेस देखने को मिल रही है। ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो अभी लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। आपने देखा कि एचयूएल एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है दोनों ही इंडाइसेस को ऊपर चढ़ाने के लिए। हालांकि अगर आप ब्रेड देखेंगे तो डिक्लाइंस की तरफ ही फेवर है। तो ये जो 2-3-4 हैवी वेट्स हैं इनमें अच्छा मूव है और इसी वजह से आप एफएमसीजी इंडेक्स को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल अभी अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन जारी है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने लगातार मार्केट्स को वीकनेस के साथ क्लोज होते हुए देखा। अगर आज का ट्रेडिंग सेशन भी क्लोज बंद होता है लाल निशान में तो इसको मान सकते हैं कि काफी ज्यादा रोबस्ट मूव के बाद अब मार्केट से कंसोलिडेशन फेज में आ रही है। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और आपको कहीं ना कहीं मौके दोबारा देख रहे हैं अक्यूमुलेशन के, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो भी मनी 9 पर अभी तक आए हैं वो यही मानते हैं कि अंडरलाइन जो बुल ट्रेंड है मार्केट्स का वो अभी भी सस्टेन्ड है। तो किसी भी तरीके का कंसोलिडेशन या किसी भी तरीके का करेक्शन अगर आता है मार्केट्स में तो उसे हेल्दी करेक्शन माना जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग फंडामेंटल अच्छी कंपनियों पर बेट कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास अपडेट को यहीं समेटते हैं, लेकिन अपने अगले शो फर्स्ट टिक में आपको मिलवाएंगे एक टेक्निकल एक्सपर्ट से जो आपको बताएंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ मनी 9 पर।